Introduction and theoretical foundation. Definition of education and educational technology. In English, the term education has derived from two Latin words, educare and educatum. Educare means to train or mold. It again means to bring up or to lead out or to draw out propulsion from inward to outward. It is derived from two Latin words, educare and educatrum. It means to train or mold, or it again means to bring up or to lead out or to draw out. Then asle education. Different types of education. Definition. Education is something which makes a man self-reliant and selfless. According to Rig Veda, education is manifestation of a perfection already in a man, like fire in a piece of a flint. Knowledge exists in the mind, suggestion in the friction which brings it out. Education is that whose end product is salvation. Education is something which makes a man self-reliant and selfless. Then asla educational technology. Educational technology is the application of scientific process to man's learning condition. Robert A. Cox. Educational technology is the application of a scientific process. Educational technology is the application of a scientific process to man's learning condition. Then I am padhiba meaning of educational technology. Educational technology, it is the field of study which focus on the theory and practice. It is the field of study which focus on the theory and practice of utilizing new technology for designing, implementing and evaluation. Technology in education, it refers to the advancement of technology which brings improvement to the quality of instruction. The term technology is mainly used in hardware approach for solving problem such as equipment, material, machine used in education. टेक्नोलोजी टेक्नोलोजी मत क्या है एक हार्डवेयर जेमती कि प्रोसेसर हार्डवेयर इक्विपमेंट मटेरियल मशीन ତାର ଏମ୍ସ of educational technology. Quality of education, improve student learning outcome, utilize strategy, organize learning technique, desirable modification, results. Okay, quality of education. Educational technology aims kono education quality of education, to improve the quality of education and make learning more effective. एजुकेशनल क्वालिटी इंक्रीज करना होगा, करने से लर्निंग इफेक्टिव होगा. इम्प्रूव स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम, स्टूडेंट का लर्निंग आउटकम इम्प्रूव करना होगा. टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन which aims to increase student learning outcome by utilizing interactive and engaging instructional material like simulation, virtual environment.
इम्प्रूव स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, इतना याद रखो। यूटिलाइज स्ट्रैटेजी, टू यूटिलाइज स्ट्रैटेजी ह्यूमन रिसोर्स एंड मटेरियल असेस्ड टू अचीव प्री डिटरमाइंड गोल, इतना मन याद रखो। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इम्प्रूव स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, यूटिलाइज स्ट्रैटेजी, ऑर्गेनाइज लर्निंग टेक्निक, डिजायरेबल मॉडिफिकेशन, क्या मॉडिफाइड करना होगा, ऑर्गेनाइज लर्निंग टेक्निक, टेक्निक ऑर्गेनाइज करेंगे, और रिजल्ट, क्या रिजल्ट आउटकम क्या आता है। ओके, अप्रोच ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, 3 टाइप मेनली। हार्डवेयर अप्रोच में क्या है, सिल्वरमैन, it is a relative technology based on physical science and applied engineering principle for developing electromechanical device or equipment, for instance tape record, radio projector, etc. सॉफ्टवेयर अप्रोच में देखो, दिस अप्रोच इज ऑल्सो टर्म्ड एज इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, टीचिंग टेक्नोलॉजी, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी, न्यूज़पेपर, बुक, मैगजीन, ये सब सॉफ्टवेयर अप्रोच है। हार्डवेयर में क्या था, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस, ये सब हार्डवेयर अप्रोच में, प्रोजेक्टर, ये सब। सिस्टम अप्रोच में द वर्ड सिस्टम केम फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टेमा, सिस्टम, इट एक्ट एज लिंक बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हाँ, ये क्या है, लिंक बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ओके, द मेन पैरामीटर यूज्ड इन सिस्टम अप्रोच, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। इनपुट करेंगे, प्रोसेस होगा, आउटपुट क्या निकलता है, ऐसे। इनपुट, इट रिफर्स व्हाट टू पुट इनटू द सिस्टम, एजुकेशन सच एज स्टूडेंट, टीचर, एडमिनिस्ट्रेशन, करिकुलम, हॉस्टल फैसिलिटी। टीचर हमारे को क्या इनपुट देता है, पढ़ाते हैं, तो वही इनपुट में जाएगा। और ये क्या है, प्रोसेस, इट रिफर्स व्हाट गोइंग ऑन द सिस्टम, इट गोज इंटरेक्शन एक्टिविटी अंडरटेकन अचीविटी गोल। हम लोग कितना वो जो टीचर ने पढ़ाए थे वो कितना हमको याद रहा, प्रोसेस हुआ, और आउटपुट, और हम रिजल्ट क्या दे, व्हाट हैज़ टू बी लर्नड, ये सब आउटपुट है। इन ये देखो सिस्टम अप्रोच, इनपुट, द सिस्टम एंड आउटपुट। ओके, देन ये डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में क्या होता है, हार्डवेयर अप्रोच इज पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच हैज फिजिकल स्ट्रक्चर लाइक ए कीबोर्ड एंड माउस। मैंने बोला था ये हार्डवेयर है, माउस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कीबोर्ड। सॉफ्टवेयर इज सेट ऑफ, सॉफ्टवेयर अप्रोच में क्या है, सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द हार्डवेयर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। एग्जाम्पल, गेम्स एंड ब्राउजर, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है वो एक एक गेम बनाते हैं, गेम्स बनाते हैं, ब्राउज़र बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, ये है सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर इज मैन्युफैक्चर्ड, हाँ ये कंपनी में, फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होता है क्या, हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड एंड इंजीनियर्ड बाय सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर कौन बनाता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाते हैं। हार्डवेयर इज फिजिकल ऑब्जेक्ट दैट कैन बी टच्ड। हार्डवेयर एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है, हार्डवेयर को हम टच कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इज ए फिजिकल ऑब्जेक्ट दैट कैन नॉट बी टच, ये भी एक फिजिकल है बट उसको हम टच नहीं कर सकते हैं। हार्डवेयर कैन बी अफेक्टेड बाय वायरल अटैक, वायरस कैन अफेक्ट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एंड देयर एप्लीकेशन। ओके, ये सब देखो हार्डवेयर टाइप्स। थैंक यू।